So, good morning, students. So, today's topic is basic concepts in research. I hope you can see the slide, right? I hope I am audible and you can see the slide, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay. So, yesterday we discussed different types of social work research. Just very quickly, I will revise it. There are five types of social work research. In fact, social work research is intervention research. But these five types are additional ones. They expand the scope of social work research. Typically, they are social researchers with significant relevance to social work. That's why we include them as social work research. The first one is need assessment study, that is to assess, to understand, to analyze what kind of social work is to be implemented, what kind of social welfare services are to be implemented are needed for a people, for a society. So that is to understand that kind of social work need. There is need assessment study. That is one type of social work research. Second one is situational analysis. This is very simple study, socio-economic situation. For example, the COVID situation in your village. You can make just a study about how many people are affected, how the people are surviving. This is situation analysis which your seniors have completed. Now, monitoring and evaluation research, that is a participatory research to develop monitoring tools and periodical evaluation. अगर कोई स्कीम चल रही है गवर्नमेंट का योजना, सो उसको मॉनिटरिंग इम्प्रूव करने के लिए उसका पीरियोडिकली उसका रिवाइज करके टू इम्प्रूव इट्स इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरफ चलाने के लिए कोई रिसर्च करते हैं बीच बीच में उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग रिसर्च. नेक्स्ट वन इज वंस ये गवर्नमेंट योजना कंप्लीट होने के बाद वंस द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड you conduct an evaluation study that is impact assessment. So impact assessment monitoring research are very close. Monitoring is done before the completion of the research, the social work program, the scheme. Impact assessment is done after the scheme is completed. 5 साल के बाद योजना खत्म हो गया फिर उसके ऊपर एक स्टडी करते हैं दैट इज इम्पैक्ट असेसमेंट. पॉलिसी रिसर्च इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू डिजाइन न्यू लॉ, न्यू पॉलिसी, न्यू लेजिस्लेशन. उसको मदद करने के लिए सोशल वर्कर को बताते हैं रिसर्च करेंगे हमारे रिसर्च के ऊपर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेंगे. सो दिस इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. दिस रिसर्च इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट and they use the government means the legislators use this research to form new law or new policy. So this was last lesson. Now today very important lesson we are going to learn today, basic concepts in research. So there are five basic concepts four are given here: concept, construct, variable, hypothesis, and the fifth one is operational definition. So this diagram I have taken from Dr. D.K. Lalda's presentation. I have told he is the author for social work research. His books are uploaded in the classroom. You can learn, you can read. You can find this diagram uh, in his presentation. So there is a relationship between concept and hypothesis. So we will study in detail. What is concept? This is very simple thing to understand. What is concept? Concept is an abstraction representing an object, a property of an object or a phenomenon. Example दिया है house, book, tree, man, woman, education, age. There are many more.
village, a village, then book, uniform, COVID-19, peace, justice, everything about which you can make some idea. कुछ आइडिया आ जाते हैं कुछ सुनने के बाद कुछ बताने के बाद वो सब कंसेप्ट होता है. So concept is different from object. This is, you can see, this is mobile phone. This is a concrete object. Okay. Now, even if this is a concrete object, you can see. Even if you close your eyes, when I say mobile phone, आपका मन में कुछ तो आइडिया आ जाते हैं. That is the concept. Concept is abstract. Concrete object is concretely visible. You can touch and feel. Object. ये ऑब्जेक्ट के बारे में आपका मन में जो आइडिया आता है, दैट इज कंसेप्ट. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? कंसेप्ट इज वेरी सिंपल. ये आपका मन की बात है. आप जो भी सुनते हैं आपका मन में कुछ तो आइडिया आ जाते हैं. दैट इज कंसेप्ट. वेरी सिंपल. दिस इज द सिंपलेस्ट पॉइंट, मीन्स कंपोनेंट ऑफ रिसर्च. रिसर्च में हम बहुत सारे कंसेप्ट की बात करेंगे. Concept is the simplest idea. Now, what is construct? Construct is a complicated concept. सारे कंसेप्ट है, लेकिन सारे कंसेप्ट कंस्ट्रक्ट नहीं है. सो कंस्ट्रक्ट और कंसेप्ट में थोड़ा सा फर्क है. वो क्या है? नाउ कंस्ट्रक्ट इज ए कंसेप्ट which does not have object to point out. अभी मैंने बताया आपको, ये देखो लॉक है, मोबाइल है, ये वाटर बॉटल है. These are all concepts, but they are not construct. Construct is, उसमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं आपका मन में. एग्जाम्पल इधर दिया है सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस इज ए कंस्ट्रक्ट. मैंने और कुछ कंस्ट्रक्ट बताता हूं. पीस, जस्टिस, जॉय, हैप्पीनेस, इवन गॉड. ये दीज आर कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है. यस. सो कंस्ट्रक्ट an abstraction formed from position of individual in the society, which is ascertained by certain indicators such as level of education, social group, recognition by the society. Social status आप जब सुनते हो आपके मन में बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं. उसका एग्जाम्पल दिया है. सोशल स्टेटस में क्या आ जाते हैं? एक व्यक्ति का इनकम, एजुकेशन लेवल, कौन सा ग्रुप का है, कास्ट, रिलीजन, सोशल रिकॉग्निशन, ऑक्यूपेशन. ये सब चीजें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बन जाते हैं. दैट इज सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस एक कॉन्क्रीट आइडिया नहीं है. इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स आइडिया, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइडिया. तो रिसर्चर्स ज्यादातर कंस्ट्रक्ट के ऊपर काम करते हैं, कंसेप्ट के ऊपर नहीं है. Concept is very simple. Everybody has concept of everything. But social workers have got some construct. For example, empowerment. ये सुनने के बाद आपको मन में क्या आइडिया आ जाता है? ऐसा किताब, मोबाइल फोन के जैसे कॉन्क्रीट आइडिया नहीं आ जाते. एम्पावरमेंट में बहुत सारे आइडियाज है. फ्रीडम, ऑटोनॉमी, असर्शन, लीडरशिप, बहुत सारे आइडियाज है एम्पावरमेंट. ओके, इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट में डिफरेंस क्या है? ओके, मैंने एक सवाल पूछ रहा हूं, आप चैट बॉक्स में एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट का डाल दीजिए. प्लीज राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट. ओके, please give example of construct in your. Now मैंने बहुत सारे आइडियाज इधर दिया है. लाइफ सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल अब्यूज, एटीट्यूड, मोरल,
motivation, these are all construct. Okay, yes. Now, let me come to the next component of research. अभी आपको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट क्या है. नेक्स्ट लेवल में आ जाता है वेरिएबल. चल, वेरिएबल क्या है? दिस इज अनदर टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी, टर्म्स यूज्ड इन रिसर्च. दूसरा एक कंपोनेंट है. A variable is an empirical property that takes two or more values. Variable, vary, change होते रहता है. ऐसा कंसेप्ट है, एक से ज्यादा चीजों को अप्लाई कर सकता है. कृष्णा, यू डोंट अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल. अभी जो बताया मैंने वेरिएबल, इसके बारे में पता आपका सवाल है या कंस्ट्रक्ट के बारे में सवाल है? दोनों के बारे में. या आपको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है? अगर मैंने बताता है कृष्णा, वो नाम सुनकर कृष्णा का फेस आपको मन में आ जाते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट का. ये एक कंसेप्ट है, वो समझ में आ गया? यस सर. अगर मैं बोलता हूं आपको पानी, आपका मन में पानी का एक कंसेप्ट आ जाता है, बराबर? एक कॉन्क्रीट कंसेप्ट. एप्पल, ऑरेंज, फूल, आपके मन में कुछ तो आइडिया आ जाता है ना, चीज वेरी कॉन्क्रीट, बराबर? दिस इज कंसेप्ट, बेसिक. क्लियर हो गया कृष्णा? अगर मैं आपको बताता हूं लाओ, आपको मन में एक से ज्यादा आइडिया आ जाता है. एक आइडिया नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडिया. लाओ में तो बहुत सारी चीज आ जाता है. दैट इज not a simple concept, it is a complex construct, complicated idea है. कृष्णा समझ में आ गया? वैसे आप जस्टिस की बात करते हैं, एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण, सोशल वर्क, एक कंस्ट्रक्ट है. उसमें एक सिंपल आइडिया नहीं आ जाते, बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं. ओके कृष्णा, समझ में आ गया कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट के डिफरेंस? यस सर. ओके गुड. नाउ वेरिएबल. वेरिएबल हम रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज करने वाला शब्द है वेरिएबल, मराठी में छल. उसमें क्या होता है, एज से एग्जाम्पल इधर दिया है, एज इज ए वेरिएबल, एम्प्लॉयमेंट इज ए वेरिएबल, ऑक्यूपेशन इज ए वेरिएबल. इसमें क्या है, एज बोले तो there can be so many people with a different age. You can divide, categorize age into children, youth, adult, 24 years old people, 30 years old people. Age is a variable which can be applied to more than one people. It can take so many different values. Okay? अगर आपको बताता है एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, उसमें भी अलग अलग वैल्यू. मैनेजर इज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट होता है मैनेजमेंट. सोशल वर्क, कैटेगरी 4, डोमेस्टिक लेबर, परमानेंट जॉब, टीचर, दिस इज ऑल कमिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट. ऑक्यूपेशन के अंदर भी बहुत सारे चीज इंक्लूड हो जाते हैं. ओके, तो वेरिएबल इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट. लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट लेवल्स. एक ही वेरिएबल को आपको रैंकिंग, ऑर्डर, आपको उसको हायरार्की बन सकते हैं. अलग अलग लोगों का अलग अलग एज होता है. सो एज इज ए वेरिएबल, द मोस्ट ऑफन यूज्ड इन रिसर्च. वेरिएबल क्या है, तो आपका रिसर्च में क्या क्या वेरिएबल यूज करते हैं. लेकिन सारे वेरिएबल कंसेप्ट हो जाता है. कंसेप्ट तो सब भी इंक्लूडेड है, कंसेप्ट में सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन सारे वेरिएबल कंसेप्ट नहीं है. सारे वेरिएबल कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट वेरिएबल नहीं है. हम अगर बताते हैं आपको इको जग की, ये एक वेरिएबल नहीं है, इसमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है आपके पास. ओके, नाउ वेरिएबल इज एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, दीज आर द वेरिएबल्स. उसी में आपको अलग अलग कैटेगरी बन सकते हैं, लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. दैट काइंड ऑफ categories are called variables. Okay, that clear? अभी वेरिएबल में भी क्या होता है,
वेरिएबल में अलग अलग तरीके से वेरिएबल होता है. Something that varies, characteristics that is common to number of things, people and events. बहुत सारे लोगों को अप्लीकेबल हो सकता है. डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है विच इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स. Independent is not dependent. It is without support of any other. Now, example में बताता हूँ. Independent variable is age. Independent variable. Caste. Independent. By birth आपको मिला है. आपका एज आपको चेंज नहीं कर सकते. आपका कास्ट, आपका व्हाट टू से जेंडर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बाय बर्थ आपको मिला हुआ है, आपको उस पर कोई चेंज नहीं हो सकता. Okay. Now, occupation, that is dependent variable. वो चेंज हो सकता है. एजुकेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल. इनकम, डिपेंडेंट वेरिएबल. वो हमेशा चेंज होते रहता है. डिपेंडेंट इज ऑलवेज चेंज. इंडिपेंडेंट नो चेंज. ओके. इंटरवीनिंग, कभी कभी यस, रिलीजन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कभी कभी बाय बर्थ यू हैव गॉट ए रिलीजन. कभी कभी उसको चेंज भी हो सकते हैं. लोग, कुछ लोग चेंज करते हैं, देन इट बिकम डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर आप चेंज करते हैं देन इट इज डिपेंडेंट. अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट. सो दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल. तो दोनों को बीच में है इंटरवीनिंग वेरिएबल. ओके. कुछ वेरिएबल्स कभी कभी बोलते हैं फिक्स है, कभी कभी चेंज भी हो सकता है. नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल एंड मेजर्ड वेरिएबल. कुछ वेरिएबल आपको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल आपको मेजर कर सकते हैं. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब है एम्पावरमेंट, इट इज ए क्वालिटेटिव वेरिएबल. क्वांटिटेटिव, इनकम, मनी, दैट इज क्वांटिटेटिव. एज, क्वांटिटेटिव. विजडम, क्वालिटेटिव. लीडरशिप, qualitative. Discrete, continuous. Discrete means 1, 2, 3. Continuous means maybe age is continuous. Every day it is changing. You cannot say that I am 5 years old. Next 5 years, 5 months, 5 days. ऐसा हो सकता है. Next day, 5 days, 5 years, 5 months, 5 days, 6 days हो जाएगा. Next day. It is continuous variable. Continuous. वो हर वक्त चेंज होते रहते हैं. Discrete means maybe this is 300 gram, this log, which is discrete. It never change. 300 gram is 300 gram. This may be maybe 250 grams. So these grams, weight, height, that is discrete. उसमें continuous change नहीं होता है. So these are different type of variable. Examples are given here: independent, dependent. The hypothesis. This is another very important concept. Hypothesis can be defined as a proposition or a tentative solution or answers of research questions which are yet to be tested. Now, hypothesis को मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ. देखो, फर्स्ट वेव में गांव में कोरोना केसेस बहुत कम था. सेकंड वेव में कोरोना केसेस ज्यादा हो गया. दिस इज एन ऑब्जर्वेशन. दिस इज एन ऑब्जर्वेशन. कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? कारण ऐसा हो सकता है, मैं जो कारण बताएगा वो बोलते हैं हाइपोथेसिस. दैट इज ओनली माय थिंकिंग. प्रोबेबल सॉल्यूशन, ए प्रोपोजिशन. मैं सोच रहा हूं फर्स्ट वेव में गांव लोगों को, क्योंकि ये सिटी में पहले कोविड आए थे, सिटी में ज्यादातर फैला था. वो सिटी लोग जब गांव में आया, वो गांव में जो आया, आने के बाद गांव लोगों को मिल गया, फिर वो सेकंड वेव हो गया. दिस इज माय हाइपोथेसिस. ये सच है, ये पता नहीं सच कैसे होगा. आप जाकर रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों को पूछना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा. उसको एनालिसिस करने के बाद यस, मेरा हाइपोथेसिस सच निकला. मैंने सोचा था
ये गांव में कैसे फैला गया कोविड? तो सिटी से जो लोग आया, पहले सिटी में था, पहला वेव सिटी में आए थे। जब सिटी से लोग भाग भाग तोड़कर गांव में आए, वो लोग फायर आया था सेकंड। दिस वाज हाइपोथेसिस, लेकिन मैंने उसके लिए सबूत, एविडेंस, मैंने गांव गांव में जाकर डेटा कलेक्शन कर दिया, फिर वो सच हो गया। देन इट बिकम थियरी। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थियरी। समझ में आ गया? हाइपोथेसिस से प्रोपोजिशन, प्रोबेबल सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन, ये क्या होगा? अभी फार्मर्स सुइसाइड क्यों कर रहे हो? एक हाइपोथेसिस क्या है? बहुत सारे फार्मर्स बहुत सारे कर्जा लिया है, लोन लिया है, उसको डेप्ट, इनडेप्टेडनेस, उनको वापस देने को मुश्किल हुआ। वो अच्छा वातावरण नहीं मिला, अच्छा क्लाइमेट, अच्छा वेदर, अच्छा मानसून, रेनफॉल नहीं, पानी नहीं था, उसका फार्म कल्टीवेशन फेल हो गया, फिर उसको पैसा नहीं मिला कर्जा वापस देने के लिए, लोन रिपेमेंट, इसलिए उनका वो डिप्रेशन में चला गया, फिर उन्होंने सुइसाइड कर दिया। सो दिस इज ऑल थिंकिंग हाइपोथेसिस। सच है क्या? नहीं, जाकर सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। सो दिस फार्मर सुइसाइड, डिपेंडेंट वेरिएबल, लोन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, दैट इज हाइपोथेसिस। ओके, नाउ आपको चैट बॉक्स में डालना है एक एक हाइपोथेसिस। एक एक हाइपोथेसिस आप डाल दीजिए, आपका ऑब्जर्वेशन में आपके गांव में क्या चल रहा है। हाइपोथेसिस कुछ रीजन, ये सच होगा नहीं होगा पता नहीं। ओके, प्लीज आप एक एक हाइपोथेसिस आपका चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। मैंने तब तक बहुत सारे हाइपोथेसिस एग्जांपल इधर देता हूं। किस्सा बसमतारी, यू आर टॉकिंग अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग, समटाइम्स सही अंडरस्टैंडिंग भी हाइपोथेसिस होता है। You can have the proper understanding. Now this example you can read. Physical and psychological health and satisfaction with life among the older adult are likely to be associated. इधर क्या बताया गया है? अगर बुजुर्ग लोग, elderly citizens are physically and psychologically fit, then they will have greater satisfaction. Their life satisfaction is connected with उनका health. Health and satisfaction में connection है. That is a hypothesis. डोमेस्टिक, ये हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। इधर देखो, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल हेल्थ, वो हेल्थ जो है उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेटिस्फैक्शन विद लाइफ इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों के बीच में कनेक्शन है, दैट इज हाइपोथेसिस। देयर मे बी डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन लोनलीनेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। ये कुछ रिसर्च है लाइफ सेटिस्फैक्शन के ऊपर। ओके, वो अगर अकेला रखते हैं लोनली, फिर उसको लाइफ सेटिस्फैक्शन कम हो सकता है। इट इज पॉसिबल दैट older adults with a high social support system would experience better satisfaction with life। अगर घर में बहुत सारे लोग हैं, देयर आर चिल्ड्रन, देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, देयर आर सो मेनी पीपल, सोशल सपोर्ट अवेलेबल है, तो उनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। तो दिस इज अनदर हाइपोथेसिस। ओके, आप प्लीज आपका हाइपोथेसिस डाल दीजिए चैट बॉक्स में। आई एम गिविंग सो मेनी हाइपोथेसिस हियर। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एम्प्लॉय मोरल आर लाइकली टू बी एसोसिएटेड। अगर वन पर्सन इज ऑनेस्ट, पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन स्टेटस, देन उसका मोरल भी हाई हो सकता है। सो दिस इज अनदर हाइपोथेसिस। देयर मे बी डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड एम्प्लॉय मोरल। अगर हाई एस्टीम वालों को अच्छा मोरल हो सकता है। इट इज पॉसिबल दैट एम्प्लॉयज विद हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन वुड हैव हायर लेवल ऑफ मोरल। सो मोटिवेशन एंड मोरल, इसके बीच में कनेक्शन हो सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस। Okay, I did not see any hypothesis in the chat box. Now, I am writing one hypothesis here. Vaccination can prevent COVID-19 pandemic. Okay, ये मैंने एक हाइपोथेसिस डाल दिया आपके लिए। ये आपको समझ में आ गया क्या? नहीं, ए सिंपल हाइपोथेसिस। सब ये सोचकर काम कर रहे हैं,
गांव गांव में आपके सीनियर सभी वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी यही कर रहे हैं, लेकिन ये प्रूव्ड थियरी नहीं है, ये हाइपोथेसिस है। हम सोच रहे हैं अगर सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिल गया तो कोविड कोरोना तो हम बच सकते हैं। ओके, ये हाइपोथेसिस को तो सारे काम चल रहे हैं गवर्नमेंट। कोरोना काल में गांव के बच्चे का पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। वेरी गुड आरती, कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया हाइपोथेसिस आपने निकाला है। दिस इज ए गुड हाइपोथेसिस। प्लीज, जैसे आपने आपका हाइपोथेसिस लिख दीजिए, ये हाइपोथेसिस है, ये सच है कि अब झूठ है, ये रिसर्च करने के बाद पता चलेगा। ओके, स्टार्ट स्कूल एंड कॉलेज, दैट इज नॉट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में दो चीजें होना चाहिए। इधर देखो, आरती का एग्जाम्पल में देखो, कोरोना काल में गांव का बच्चे का पढ़ाई, एक कोरोना काल, कोरोना के वजह से एक कोरोना का एक सब्जेक्ट हो गया, एक वेरिएबल, दूसरा है बच्चों का पढ़ाई, ये दोनों का कनेक्शन आप बता रहे हैं, दैट इज हाइपोथेसिस। एजुकेटेड स्टूडेंट्स आर डिप्रेशन बिकॉज टू नॉट ए जॉब। हाँ, गुड हाइपोथेसिस, संतोष, नाइस, दैट इज हाइपोथेसिस। ड्रग एडिक्शन अमंग बोडो कम्युनिटी एंड काउंसलिंग, दैट कैनॉट बी हाइपोथेसिस में आपकी स्टेटमेंट बताना है। ड्रग एडिक्शन आपको ऐसा बता सकते हैं, ड्रग एडिक्शन अमंग बोडो कम्युनिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय काउंसलिंग, दैट इज अ हाइपोथेसिस. ओके, कोविड काळात शाळा बंद असल्यामुळे लहान मुलांवर होणाऱ्या परिणामांचा अध्ययन. गुड कुसुम, दॅट इज अ हाइपोथेसिस. कोविड काळात शाळा बंद असल्याचे मुलांबरोबर बहुत सारे परिणाम हो सकता है, दैट इज अ हाइपोथेसिस. ओके, कल्पनात्मक वृत्ति, करेक्ट, लखन, दैट इज राइट. कल्पनात्मक वृत्ति, दैट इज हाइपोथेसिस का डेफिनेशन दिया है. कोरोना का वजह से बहुत लोगों को जॉब चिट गई है. दैट्स अ गुड हाइपोथेसिस. सुनीता, दैट्स अ गुड हाइपोथेसिस. कोरोनाचा काळात फार्मरच्या खूप नुकसान झाले. या, दैट इज अ हाइपोथेसिस. कोरोना काल में किसानों को भी बहुत नुकसान हो गया. यस, राइट. Yes, now these are hypotheses. This is recorded, and you can go back to this class later on also. So many people have understood what is hypothesis. That's enough. अब hypothesis example आपको देना बहुत important है. Then we can understand hypothesis क्या है, समझने की जरूरत नहीं. Now operational definition. ऑपरेशन डेफिनेशन क्या है? ऑपरेशन डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन दोनों प्रकार होता है. एक डिक्शनरी का जो डेफिनेशन होता है, दैट इज डिक्शनरी डेफिनेशन. ऑपरेशन रिसर्चर अपना जो शब्द को अपने जो यूज किया है, अभी एक एग्जाम्पल में बताता हूं. मच्छिंद्रा एक हाइपोथेसिस दिया है, कोरोना काल में किसानों का भी बहुत नुकसान हो गया है. ये हाइपोथेसिस को आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे यूज कर सकते हैं, अगर उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, फिर उसको बताना है किसान, उनका मन में किसान का आइडिया में क्या क्या आ जाता है. किसान, देन मच्छिंद्र विल टेल, किसान का मतलब है ऑल द मेन एंड वीमेन अबव 18 years of age वर्किंग इन द फील्ड इन हिज विलेज. ये किसान हो सकता है. अगर किसी ने फॉरेस्ट में जाते हैं, कुछ ठंडू लीव्स कलेक्ट करते हैं, उसको किसान बोल सकते हैं क्या? अगर उनको भी किसान का डेफिनेशन में रिसर्चर को डाल सकते हैं. देयर इज अ फ्रीडम फॉर रिसर्चर टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूड सम पीपल इन द डेफिनेशन. अभी उन्होंने लिखा है नुकसान हुआ है. नुकसान का डेफिनेशन क्या है, ये मच्छिंद्र को देना ही पड़ेगा. उन्होंने नुकसान में बताएंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दैट इज नुकसान. ओके, नुकसान का एक डेफिनेशन आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अनदर डेफिनेशन आ गया. सो रिसर्चर इज फ्री. Researcher has to give a definition for all the concepts and variables and hypotheses used in the research. ये डिक्शनरी का मीनिंग, डिक्शनरी में एक मीनिंग दिया होगा, नुकसान का मीनिंग दिया होगा, लेकिन रिसर्चर कौन सा मीनिंग में यूज करते हैं, दैट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड रिसर्चर्स डेफिनेशन. ओके, इसके बारे में कल भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. टुडे आई वांट टू कंप्लीट. ओके, so you can still think about your research
hypothesis. Operation definition, the definition given by the researcher. Researcher defines, explains, interprets, and describes meaningfully every term used in the topic, objective, and hypothesis. समझ में आ गया ऑपरेशन डेफिनेशन क्या है? Okay, we will come back to Yes, sir. this tomorrow. Today, let me stop.